गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 Hari Om. Let there be peace, let there be peace and love amongst all the human beings of the universe. Let there be peace. Om Shanti Shanti Shanti. We are contemplating on the 17th chapter of the booklet named Essence of Yogavaasishtha, being prepared by Swami Gyananandaji Maharaj, where they have taken the details from the main Yogavaasishtha book and taken out the essence, so that 1698 shlokas gives us the total story of Yogavaasishtha to keep our mind under tranquility, contentment, blissful, cheerful, happy, peaceful, and over and above relaxed and cool mood. That is what is the purpose of this essence of a Yogavaasishtha contemplation. Now, what actually we are doing? We are doing the practice this knowledge to yourself. Whoever is listening, even the speaker is listening. So, and every satsang is addressed to the mind of person who is either delivering this or talk or who is listening. So Yoga Vasishtha teaches us to practice this Pauranic stories, beautiful stories. Through stories, things are being told and point are being made. The beauty of Yoga Vasishtha is you are not being taught, but yet you learn. So you can demonstrate this knowledge through action. So this knowledge will come in our life through the contemplation of the Yoga Vasishtha. योगा वशिष्ठ की स्टडी करने से ये नॉलेज अपने जीवन में आविर्भूत होगा। और इसका क्या प्रमाण है? श्री भगवान दास पंडित वृंदावन सरस्वती ऑफ बनारस has read this 165 times in the year 1905. 165 बार उन्होंने योग वशिष्ठ पढ़े हैं। और फिर ये कंडेंस वॉल्यूम उसमें से निकला है, और ये कंडेंस वॉल्यूम होने के बाद भी स्टिल इट इज मेंटेनिंग अ continuity and retaining the flow of teaching. So it is such a beautiful note, and where it leads us, it is the greatest adventure of consciousness and joy, and it leads us to what? Vasana tanavam, thinning of vasana. अपने जो मेंटल इंप्रेशंस है उसको स्लोली वो डिसॉल्व करता है, कम करता है. सो थिनिंग ऑफ इंप्रेशंस फ्रॉम माइंड, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. एक रात भर में नहीं होने वाला. अभी पढ़ लिए कल से सब कुछ याद रहेगा, ऐसे नॉट पॉसिबल. सो वी हैव टू वर्क ऑन द माइंड, एंड व्हाट इज वर्किंग ऑन द माइंड हैज बीन टोल्ड हियर. अपने को अपने मन पर काम करना है, मन से काम नहीं लेना है, मन पर काम करना है. मन से काम लेना है क्या? मन से काम लेना है कुछ खाना बनाना, कुछ करना, ड्यूटी करना, ये मन से काम लेना है. और मन पे काम करना है शांत बैठना है, वो मन कहाँ कहाँ जा रहा है उसको देखना है, उसकी परिस्थिति कैसी है, उसको हर वक्त अपन हैप्पी मोड, चीयरफुल मोड में कैसे रखेंगे. इन शॉर्ट, क्वालिटी ऑफ माइंड चेक करना है. देखो, अपनी क्वालिटी ऑफ माइंड चेक करना हर वक्त. उसी को वासना तानवम, थिनिंग ऑफ वासना बोले गए हैं. सो थिनिंग ऑफ इंप्रेशंस फ्रॉम माइंड. और ये जितना जितना कॉन्टेम्पलेट एवरी डे, यू हैव टू क्लीन द यूटेंसिल विच इज मेड ऑफ ब्रास. जो ये यूटेंसिल ब्रास से बनी है वो अपने को क्लीन करना पड़ेगा एवरी डे. सो व्हाट इज अ सिंपल रूल? Whatever we have given importance, that alone become source of misery to us. जिस किसी को अपन लौकिक चीज को अपन ने महत्व दे दिया, वो चीज ही अपने जीवन में परेशानी लाने के लिए कारणीभूत है और सफिशिएंट भी है. वो परेशानी लाएगी ही लाएगी, क्योंकि उसको तुम ज्यादा महत्व दे रहे हो, उसके पीछे दौड़ रहे हो. इट डज नॉट मैटर वेयर यू आर, बिहेव नॉर्मल,
एंड अबाइडेंस मस्ट बी इन द ट्रूथ. जहाँ कहीं हो अपना बिहेवियर नॉर्मल रहना चाहिए. एंड योर माइंड शुड बी ऑलवेज अबाइडिंग इन द ट्रूथ. वॉट एवर द एक्टिविटी यू आर डूइंग, जो कोई एक्टिविटी कर रहे हो दैट इज ओके, अपनी एक्टिविटी करते रहो और माइंड को ट्रूथ में रखना है. व्हाट इज दिस ट्रूथ? दिस इज अनडिवाइडेड अनफ्रैगमेंटेड कॉन्शियसनेस दैट इज ट्रांसेंडेंट इमैनेंट वन विदाउट सेकंड. वही सब कुछ है, हर वक्त याद रखना है. When you are attached to the objective world, that is the bondage. And be with everyone, but always remember that you are on the spiritual path. सब लोगों के साथ रहो, पर हर वक्त याद रखो कि तुम स्पिरिचुअल पाथ पे हो. तुमको स्पिरिचुअलिटी करना है, बाकी लोगों को वर्ल्डली थिंग्स में आनंद लेना है, उनको लेनी दीजिए. वी आर नॉट सपोज टू टेल अदर पीपल, अपन अपने को करना है. तो जैसा बोला गया है कि वी हैव टू वर्क ऑन द माइंड. माइंड पे काम करना है, माइंड से काम नहीं लेना है. तो कैसे पॉसिबल है? डोंट बिकम एबनॉर्मल इन क्राउड, बट यू मस्ट अबाइड इन द ट्रूथ. एबनॉर्मल बनना है ना, हिमालय चले गए या दो दो तीन तीन घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ काम हम सब छोड़ दिए. सो डोंट बिकम एबनॉर्मल, बट अबाइड इन द ट्रूथ. जो कुछ देख रहे हो भगवान की लीला चल रही है. इफ यू गो टू द धर्मपेट मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, भगवान की लीला चल रही. वेजिटेबल बेच रहे हैं, वो भी भगवान की लीला चल रही. वेजिटेबल खरीद रहे हैं, वो भी भगवान की लीला चल रही. सो आर एवरीवन आर गॉड? नो, एवरीवन इज नॉट गॉड. इनफैक्ट गॉड इज अलोन. सभी गॉड है, सब कोई गॉड नहीं. उनकी एक्शन तो मटेरियलिस्टिक रहेगी, पर वो ईश्वर के तत्व से सब कुछ चल रहा है. When you are attached to the objective world, that is only the bondage. जब ये जगत को आप ऑब्जेक्टिवली अटैच हो जाते हैं, that is the bondage. And so what has to be done? We have to bring the purity. And this, what is this purity? Purity is only, it is the redolent with the vibrations of sincerity. तो हमको सिंसियरिटी चाहिए. काहे की सिंसियरिटी चाहिए? कि वन विद द ट्रूथ पता करने की. पैशन फॉर कम्युनिकेशन, अपने को पैशन रहना चाहिए. तो are we supposed to do tapasya? No, tapasya is torturing the body. You are not supposed to do that. You have to remain happy under all conditions. यही अपनी तपस्या है. So what will happen? Then people will feel the fragrance of your presence. लोगों को अपने साथ रहने में मजा आने लग जाएगी. People will feel, you are not supposed to tell them. They will feel, अरे he is talking very nicely nowadays, he is not disturbed. His personality is always cheerful, happy, blissful, contented and over and above relaxed and cool. ये हर वक्त रिलैक्स एंड कूल रहने लग गया. दैट मीन्स समथिंग गुड मस्ट हैव हैपेंड इन हिज लाइफ. देयर इज सम चेंज which has taken place in him. So let us try to follow him. The people will start following him. So likewise it has been told. And now let us come to the page number 178, chapter 17 and shloka number 51. Yesterday we have come till 50, we are starting now 51. श्रीराम उवाच एवं चित्तशम प्रोक्तम सम्यक ज्ञानम कथम प्रभो. Now Sri Ram is asking, Sri Ram is asking a question to Bhagwan Vasishtha Rishi. And what is the question? Lord, the tranquility of the mind has thus been told by you. आपने हमको बताया, अभी सुख दुख समान बता दिया. But how this right knowledge is obtained? प्रभु ये right knowledge हमको मिलेगा कैसा? ये तो आपने बता दिया ट्रैंक्विलिटी रखना है, पर भगवान ने हम ट्रैंक्विलिटी रखेंगे कैसे? भगवान श्री राम पूछते हैं ट्रैंक्विलिटी कैसे रखेंगे. तो अभी वही यहाँ बताया जा रहा है कि ट्रैंक्विलिटी कैसे रखना है. सो ट्रैंक्विलिटी रखने के लिए वशिष्ठ ऋषि उवाच. वशिष्ठ उवाच श्लोका नंबर 51. यथा मूर्तार्थदर्शी त्वं सम्यक् ज्ञानं भवेत् यथा इमा घटपटाकार पदार्थ शतपङ्कजम् आत्मैव नान्यदस्तीति निश्चया सम्य वीक्षणम्. Pursuing objects truly would be right knowledge, for which reason the conviction these hundreds of groups of objects in the form of vessels, clothes, etc. are only the self and there is nothing else is a right perception. So beautifully it is written here, Ghatapatakara Padartha Pangya. That means hundreds of groups of objects in the forms of vessels, clothes, everything is nothing but that self. So again it has come to same thing, undivided, unfragmented consciousness. दिखता सब अलग अलग है, यूजफुल भी है,
बट वो रियल नहीं है, बिकॉज व्हाट इज अ रियल? रियल इज ओनली द ट्रूथ, दैट इज अ डिविनिटी. सो यू परस्यू दैट इन दिस मैनर, pursuing object truly with the right knowledge. And what is the right knowledge? Divinity, self, truth, happiness, bliss is only the right knowledge. You lose the opportunity to become miserable if you start doing the spiritual practice. अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो आप जीवन में मिजरेबल हो ही नहीं सकते. तुम्हारा ये जो फैसिलिटी है मिजरेबल होने की, वो फैसिलिटी आप लूज कर दोगे. यू कैन नॉट बिकम मिजरेबल इन दिस लाइफ. आप कभी मिजरेबल हो ही नहीं सकते. सो दैट इज व्हाट इज बीन टोल्ड हियर. एंड तो इस प्रकार से आपको ये जीवन परस्यू करना है, ये जीवन ऐसा देखना है. इसको राइट परसेप्शन कहते हैं. दिस इज ओनली द राइट परसेप्शन. सो नो दैट इट इज बट फॉर श्योर दैट इज द राइट परसेप्शन. 53 श्लोका. न चैतम अन्यत्नो चित्तम ब्रह्मवेद वृजुम्भते सर्वम एकम परम ब्रह्म को मोक्षम कस्य बन्धता. That pursued world of object is not different, nor is the mind. Brahman or the Supreme Spirit alone pervades here. Everything is one Supreme Spirit, Brahman. What is the liberation and to whom is the state of bondage? तो ये जगत कैसी है? न चेतम अन्यत्र नो चिंतम. आप जगत में कुछ भी देख लो, आपका मन ईश्वर में जाना चाहिए. सो व्हाट इज दैट? मन जे न रहे तव श्री चरणे गुरुदेव दया करो दीन जन. So now what has been asked is Mana Jena Rahe Tava Sri Charane. So it is, you have to pursue that, not Sri Charane alone. It is like following life, it is only the divinity. So whether you like it or not, whether you know it or not, whether you want it or not, it is divine. So whether it is your mind, whether it is the objects of the world, everything is nothing but the Brahman, that is the Supreme Spirit alone pervades here. सब कुछ जो Supreme Spirit है, everything is one Supreme Spirit, one Brahman. तो फिर कहाँ बंध है और कहाँ मोक्ष है? तो एवरीथिंग इज एनकम्पोज. तो ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, ईशा, it gives that everything is been now covered with that divinity. Rather, everything is only divinity, divinity, divinity. That has been said by Ishavasya Upanishad. And the same thing is told in the shloka number 53 here. 53 नंबर के श्लोका में भी वही बताया गया है कि जो कुछ चीजें अपन परस्यू कर रहे हैं, जो कुछ चीजें अपन देख रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ईश्वर से छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है. तो अभी अपन देख रहे हैं इजराइल और गाजा की वॉर चल रही है, पैलेस्टीन की वॉर चल रही है. ये क्या, ये भी ईश्वर है? हाँ जी, ये भी ईश्वर है. सब जगत में जो कुछ हो ईश्वर की ही मर्जी से चल रहा है. जब रुकना होगा तो रुक जाएगा. वैसे जगत में जो कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी हो रहे हैं, ये भी सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है. मेरा मन कभी कभी खराब हो जाता है, हाँ जी, वो भी ईश्वर की मर्जी से होता है. मन कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है, हाँ जी, वो भी ईश्वर की मर्जी से ठीक हो जाता है. यहाँ बोला गया है द परस्यूट वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफरेंट नॉर इज द माइंड. जो अपना मन है और ये जगत है, ये जो अपन परस्यू कर रहे हैं, ये ईश्वर से छोड़ के अलग नहीं है. जैसे अपन सेंस ऑफ डिविनिटी लाया, अपन ने सोचना चालू कर दिया कि अलग अलग है, तो वैसी समस्या अपने सामने आना शुरू हो जाता है. ब्राह्मण और द सुप्रीम स्पिरिट अलोन परवेड्स हियर. वो सुप्रीम स्पिरिट, अनफ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस, अनफ्रेगमेंटेड डिविनिटी, वो ही सामने आती है. सो एवरीथिंग इज वन सुप्रीम स्पिरिट. सब कुछ जगत में का एक सुप्रीम स्पिरिट ही है, दूसरा कुछ नहीं. तो फिर कौन सा मोक्ष है और कौन सा बंधन है? फिर तो आप लिबरेट हो गए, जीवन मुक्त हो गए. ऐसा पुरुष जीवन मुक्त होता है. श्लोका नंबर 54, चैप्टर नंबर 17. सम्यक आलोकिते रूपे काष्ठपाषाण वाससाम मनागपि न भेदोस्ति वांसी संकल्पनो मुख. When the nature of object like wood, stone, cloth is well pursued or considered, there is not even a little difference. अगर आप ये जगत में के ये वुड यानी लकड़ा, स्टोन यानी पत्थर, क्लोथ यानी अपन कपड़े, जो कुछ देख रहे हैं, अगर ये देखते हो तो अगर आपको हर वक्त ईश्वर की ही याद आ रहा है, तो आपका परसेप्शन बराबर चल रहा है. अगर आपको वो पत्थर की जगह पत्थर, कपड़े की जगह कपड़ा और वुड की जगह वुड देख रहे, तो आप बराबर नहीं देख रहे. वो सब चीजें यूजफुल है, इंपॉर्टेंट भी है, उसका यूज भी करना है, पर डिवाइन भावना से यूज करना है. सो वेयर आर यू इंटेंट ऑन इमेजिनेशन. फिर आप ये सोच कर रहे हो, आपकी सोच कहाँ जाएंगी? आप कहीं सोच ही नहीं सकते.
न भेदोस्मि क्वांसी संकल्पनो मुख। आप भेद करके उस पर कोई कोई संकल्प करते हो, संकल्प कैसे कर सकोगे? जैसे स्टोन्स है, if you bring the stones from Rajasthan to put as a tiles, you will grind them, do everything, or you take a stone and from the sculpture make a beautiful Rama Murti out of that. So good. So the Ram was already existing in that stone. So only the sculptures have removed the extra stone and the Ram got manifested. Similarly, the tiles gets manifested as per a requirement. It is not saying that you don't use it. It is not saying that you don't use for a right cause. So when you can use this world for a right cause, then only it is called as divinity. Rest thing is only to poison your mind. अपने मन को शांत रखने के लिए, वो विचारों की महफिल में अपना मन न जाए, ये अपने को सबसे पहले देखना है। तो लास्ट श्लोक का क्या है? आदो अन्ते च संशांतम स्वरूपम अविनाशी यत् वस्तु नामात्मनश्चैवं तन्मयो भव राघव। So Raghav, now what is saying? Vashishta Rishi is telling to Bhagwan Ram, Raghav, be full of that natural state of oneself, which is indestructible, tranquil at the beginning, tranquil at the end, and is also very the essence of the reality of the self. कहने क्या बताया? राघव को now order is given by Vashishta Rishi. Raghav, be full of the natural state of oneself. तुम्हारे में full natural state of oneself होना चाहिए. जो कुछ हुआ आज के दिन सब ईश्वर की इच्छा से, which is indestructible. वो उसको कोई खत्म नहीं कर सकता. Tranquil at the beginning, वो tranquil at the beginning रहता है. Tranquil at the end, end में भी tranquil रहता है. Naturally between भी tranquil रहेगा. And is also very the essence of the reality of the self. वही reality है. That is only the God. So everything is divine. So Swami Vivekananda used to say, people used to say, so he used to reply, no, 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 everything is not God. It is God alone. सब चीजें गॉड नहीं है, अरे वो गॉड ही है. इट इज ओनली चिदाकाश. When we talk about Bhutakash, Chittakash, and Chidakash, Bhutakash is our transaction, what is happening as a worldly life. Chittakash, we keep on thinking, unnecessary imagination, unnecessary reaction to the world. Both the things are empty sky, so you can do it infinite activity. Whereas Chidakash is a solid conscious existence. उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ सिर्फ डिविनिटी 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 है. वहाँ सिर्फ ईश्वर का चिद्विलास और ईश्वर का चिद्विलास ही है. नथिंग अदर देन दैट. तो फिर अभी क्या करना है? जैसा द मैनर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड अपन ये चैप्टर पढ़े. इन दिस चैप्टर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टोल्ड इज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड. दैट मीन्स it is not actually destruction of mind. It is basically like the ice cube is melting in water. जब अपने मन की जब भावनाएं और अपने जो मन के विचार पूरे शांत और उपशांत हो जाएंगे और वो मन वैसा मन वो कॉन्शियसनेस में लय हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड. चित्त इज एसेंशियली कॉन्शियसनेस व्हेन ऑब्जेक्टिविटी इज निगेटेड फ्रॉम इट. उसमें से ऑब्जेक्टिविटी निकाल दिया तो कॉन्शियसनेस हो गया. ऑब्जेक्टिविटी इज एन इमेजिनरी, इट इज नॉट रियल. सो द चिदनाश मीन्स रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कंपोनेंट ऑफ द नॉलेज. अपने नॉलेज में से ऑब्जेक्टिविटी कंपोनेंट निकाल देना है सबको. जैसा ईशावास्य उपनिषद बोलता है, सबको ईश्वरी इससे भावना से आच्छादित कर देना है. नॉलेज विथ ऑब्जेक्टिविटी इज प्रोमिनेंट एंड कॉल्ड एज माइंड. सो द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स शुड फॉर्म द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. इसीलिए आफ्टरनून मीटिंग और स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स अपने को करना बहुत जरूरी है. जस्ट कीप ऑन दी क्वालिटी ऑफ माइंड अंडर ऑल कंडीशन. सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज क्या है? क्वालिटी ऑफ माइंड अपनी अच्छी रहना चाहिए. irrespective of where you are, irrespective of what you are doing, irrespective of whatever is happening in the world, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होना चाहिए. असंस्पृष्ट विकल्पता, नॉट गेटिंग डिस्टर्ब बाय एनी काइंड ऑफ activities, any kind of person or any kind of procedures happening in the world. So that has been told here. Sometimes thoughts will elaborate and sometimes we will get confused. It's okay. The mind is like that. कभी वो अच्छा रहता है, कभी बुरा हो जाता है. अगर माइंड बुरा है तो चेंज द एक्टिविटी. If you are getting bored by listening to scripture, go and start doing blowing the field, start playing some game, listening to some music, and again come back to the spirituality. That is we are divine. Sometime you may your mind will get agitated. ये क्या divine divine लगा के रखा है? So let us do something. So go and do something. Again थोड़ी देर के बाद mind आ जाएगा divinity पे. So this mind is like a intoxicated monkey. You have to control him properly. Once you control him, he will behave like an obedient servant.
अपना ओबीडियंट सर्वेंट करके काम करेगा. Mind comes under the influence of agitation. So although your studies are concerned, knowledge is concerned, there is no doubt. आपको सब knowledge है, studies भी अच्छी हो रही है, सब कुछ बराबर है. सिर्फ apply applications में problem आ जाता है. Who am I? But mind still is troubling you. Then this is because you have a problem of unwanted habitual thinking. पुराना आपकी आदत है जन्मों जन्मों की habitual thinking unwanted की. So मनोराज्यम, you are in the मनोराज्यम. As you think more and more, so क्या करना चाहिए to come out of that? You can do some little yoga techniques or tricks. Do omkar for 11 times. What will happen? Immediately one will be tranquil. Do anulom vilom for some time. Mind will become tranquil. Go on the terrace of the your place of staying and lie down there. See the sky. Sky is infinite. Mind will get tranquil. So by these various methods, movement of mind is control. ऐसे अलग अलग methods use करके अपने माइंड की मोमेंट्स को शांत करना है. तो व्हाट इज मेडिटेशन? Meditation is a GPS by which we start meditation from the point of origin where my thoughts are moving like anything, and the end is what? End is absolute truth. Now we have formed the GPS of our meditation. Disturb mind से अपने को absolute truth में जाना है. So how to go that? I must know absolute truth that which we are studying. When our agitated, disturbed personality is dissolved, we start remaining calm and quiet. So the test is that if you are remaining calm and quiet, that means you are going towards the divinity, that is God, that is the self. The availability and experience of truth is only in the form of existence. अपने को सब existence form में दिखता है. So why can't we see that divinity in that? Everything in this world is nothing other than me. ये जगत में की जो कोई चीजें है ये मैं ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं है. He who has come to know that whole world is its own self. How there can be delusion? जब उसको पता चल गया कि अरे ये जगत है ना मैं ही हूँ, तो फिर delusion कहाँ से आएगा? So how can be there misery? फिर misery भी कहाँ से आएगी? Misery भी नहीं आएगी. Because everything is his. That is yathartha and samyak jnana. That is the really a level of which we should reach. So that is zero desire. We should come in a zero desire map. So when we are holding on to the body, then we cannot experience other than the differences. जैसे अपनी मेरी बॉडी दूसरे की बॉडी, तो अपने को differences आएंगे, we will be frustrated. So if question comes up in your mind, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, that means you are a social worker and not a truth seeker. आप truth seeker नहीं हो, सिर्फ क्वेश्चन आप पूछ रहे हो. In Mundak Karika it says that Thakur is alone real. The meaning of that, the whole world is illusionary. Whole world is like a heaving of the ocean. जैसा ये ओशन ऐसा ऐसा हिलता है, हेव होते रहता है नीचे से, और आवाज भी आती है उसकी. इट इज लाइक हेविंग ऑफ द ओशन. इट कम्स फ्रॉम विद इन एंड गोज बैक. अपने हंसने से आता है फिर अंदर चले जाता है. सो व्हेन स्पेस स्टार्ट्स मूविंग इट इज कॉल्ड एज एयर. एंड फर्स्ट नॉलेज यू शुड ऑब्टेन. अपने को पहले नॉलेज मिला लेना है बाय inquiry, and then practice Shrotriya Brahmanishta. First get the knowledge, then you know that it is Shrotriya Brahmanishta. Seeker is asked to go to the teacher who is well versed with the scripture and also established in truth. So establish, and he will guide you. So he has to be Shrotriya Brahmanishta. So here Raghav, that which is before creation and after destruction, it is the same like work. Wave is born, wave remains, and wave dies. But what remains continue is water. But we take wave as real and start doing tapasya, going to the ashrama, doing some methods here and there, religious, spiritual methods which we do, and then suffer in a life. But actually, it is all divinity, so be happy always. By that which is never disturbed, either in the beginning or in the end, or which is existing, is a reality. जैसे जागृति में अपन है, स्वप्न में भी अपन है, सुषुप्ति में भी अपन है, समाधि में भी है, और समाधि तो अवस्था तो जो है उसके आगे की व्यवस्था में अपन तो हर वक्त है. So be happy always. So hold on to this principle that infinite cannot be destroyed, modified and created. हे अमृत के अधिकारी गण, तुम ईश्वर की संतान हो, आओ इस मिथ्या भ्रम को झटक डालो कि तुम भेड़ हो. तुम जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो. Jara means you cannot have a disease. Maran means you cannot have a death. Nityanandamaya, the Atma means you are always there. You cannot be destroyed, modified or created.
ब्रह्म इज दैट एंड दैट इज नन अदर देन अस. वही ब्रह्म है और वही अपन है. दैट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. इसको समझदारी, फिर से वहीं पे आ गए. निष्कलंक जीवन जीना है, समझदारी से जीवन जीना है. हे राघव, यू बी दैट. राघव, आप वो रहो. यू डोंट हैव टू बिकम दैट. आपको ये बनना नहीं है, आपने उसमें रहना है. व्हेन ऑब्जेक्टिविटी इज कंप्लीटली ड्रॉप, ओनली प्योर कॉन्शियसनेस रिमेन्स. जैसे ऑब्जेक्टिविटी ड्रॉप कर दी, प्योर कॉन्शियसनेस उसमें रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है. ओनली प्योर कॉन्शियसनेस. एंड व्हाट इज प्योर कॉन्शियसनेस? अनफ्रेगमेंटेड, अनडिवाइडेड, undisputed, unarguable, only transcendent, immanent, one without second, only the self, only the Brahmin is the divinity. So it is only bliss, nothing other than that. So when the objectivity is completely dropped, only pure consciousness remains. Unburden your possessions and relations of your life. You are that. अपने possessions relation drop कर दो, you are that. You don't get that, you don't become that. You have to discover that. That's it. आप वो बनते नहीं हो. आप वो कहीं से मेहनत करके नहीं, तो आपको सिर्फ डिस्कवर करना है कि आप वो हो. दैट्स इट. डिस्कवरिंग इज ऑलवेज दैट विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. आप डिस्कवर करते, लाइक देयर आर something which you lost, and after proper survey and find that, you find it out in the evening. Morning you lost that. That means you're discovering the whole day that keys were lying beneath the bed. So you discovered it was already there. It is not gone anywhere. That is what is your essential nature, and not other than what you are thinking. यही आपका essential nature है. There is nothing other than this. So this is what Vasishtha Rishi has to tell Rama through the chapter number 17, that is the manner of destruction of mind. So he has told this in the manner of destruction of mind. He has taken the four topics in this, namely Bhasa Vilas Samvad. We have seen Bhasa Vilas Samvad, and when Vilas has told to Bhas has told to the Vilas that if mind is going in the world in duality, you will suffer. If it is going in individual, you will be always happy. That was the first topic. Second was Sansikti, that is close attachment, where the mind goes to these worldly things to get attached. There it is told Karma Sakti, Kartutva Asakti, Arkartutva Asakti, and then Phalasakti. From there, your mind has to taken out. And then we know that these all Asaktis are barren, whereas commendable Asakti is that if you are Asakti with the Bhagwan, or you are asakti with oneness, then it is commendable, it is useful to us, and that is to know the truth, divinity, that is commendable. Then the third topic was Jivan Mukta Samachar, how the person who is a Jivan Mukta, he stays that he is always in a Turyatit state, he is already remains one with that and remains always happy. And the last topic was Chitta Spanda Nirod, where we came to know that there are two methods to do this, yoga and gyan. So do this by yoga or gyan or a combination to know the truth. And subsequently, when Rama has asked how to attain this knowledge which is required for a tranquility, there he has told very nicely that first this knowledge has to be known which is unfragmented, undivided consciousness. ये नॉलेज ईश्वरी नॉलेज है, जैसा ईशा वैश्व उपनिषद कहते हैं, वही ये सब तरफ नॉलेज है. तो क्या करना है, क्वालिटी ऑफ माइंड अपनी हर वक्त अच्छी रहना चाहिए. Our quality of mind has to be really good. There should not be any problem of our quality mind. That has been told again and again. And this is the purpose, to know the manner of destruction of mind. That means how the mind gets dissolved in the consciousness by thinning of our vasanas, thinning of thought process has been told here. Like ice cubes get dissolved in the water and get one with that and become only water, which is its original state. So we are to also get our original state is what? Our consciousness only, which is infinite, which is undivided, which is unfragmented, which is bliss, which cannot we cannot have a miserable or unfortunate attitude. That is only because of our upadhis. This has been told. With this declares Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sri Ramachandra Arpanamastu. Submitting the divine fruits to the holy feet of Sri Ramachandra.